Am I audible to you all? Yes, Yes, ma'am. yeah. Okay, fine. Okay, so share the screen. I hope the screen is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. So, yesterday we had a discussion about a brief introduction about what is Spark, and we also had a discussion that what were the limitations of MapReduce, which led to the development of Spark. Okay, one thing which like if you if you people look at the history of Spark, so Spark was basically, it was initially a project just like Hadoop, which was initially called as Nutch. Okay, and it was an individual project which was being done by Doug Cutting and Mike Caffarella, right? So likewise, Spark was also being developed at UC Berkeley. Okay, there it was Mr. M. Zaharia. He was the professor who was basically working over Spark with his team, and then gradually, it was around 2014. The Spark was you know in 13 it was handed over to Apache Software Foundation. Basically it was donated, and then within 1 year of the handing over to Apache Software Foundation, they basically found out that within 1 year, due to the vast capabilities of Spark, so it very quickly gained the popularity. Okay, and from 2014 till now, Spark has major, like, very broadly captured the market with respect to the analysis of big data, be it with respect to your machine learning or anything. Okay, dealing with the SQL type of data, streaming type of data. Okay, so and it was because one thing, that Spark was faster in processing. Second crucial thing was that it was doing in-memory processing. Okay, and the third one was that due to Spark had its RDDs, Spark was, very much capable of, caching the data, and maintaining the fault tolerance and everything. Okay, so all these factors led Spark to be to be a market leader in when we talk about processing of the data, big data processing in respect to in a cluster environment. Okay, so all these things were related to Spark, which we had briefly discussed yesterday. So now, like in Spark SQL, I told you that we had this like if you have a structured data, and you have let's say you have a proper JDBC connection between your data. Let's say you have a database, okay, and um, you have connected it with your Spark for processing it. So Spark SQL gives you an environment where you can deal with such kind of data and process it efficiently. Okay, likewise, Spark also had another component which is called Spark Streaming. Okay, so what this Spark Streaming does is, so we have seen that in Hadoop, what happens is that we have in Hadoop, what we have is that we used to have this file. This file was being divided into multiple blocks, and these blocks are stored across the cluster. Okay, so
similar is the fashion for your Spark as well. Okay, because Spark is using the base. It is built over Hadoop, so this model is well, identified or well, um, uh, very well incorporated with Spark as well. Okay, but see here, what is this that key your data is this file is basically, you can say this is the file which is being generated over the period of time. Okay, so let's say this file is from, let's say, April to your September. Okay, from April to September, you collected some data and it was stored in your HDFS. Okay, but what say that if you want that, you want that, let's say अगर अभी 5 second पहले कोई data generate हुआ है and you need to process that data. Okay, the data is, continuously flowing. It's a stream of data which is flowing continuously. Okay, so in that case, our MapReduce was failing. Okay, because for MapReduce it has to have your data which is being very well stored in your HDFS, and if the data is continuously changing, then MapReduce will not be able to process the data. Okay, because every time, you can think of it, like, if you practically think that this data is already, generating, the file is already always changing itself, how you'll gonna manage this data storage. Okay, how this data will be updated in HDFS so quickly. Okay, and how MapReduce will be processing it when MapReduce basically does multiple read write operation over the data for to do the process. Okay, so for to rectify this, or you can say to handle such kind of streaming data, Spark was introduced with this streaming component. Okay, and what happens is here we have input data stream. Okay, the data is flowing continuously, and we have Apache Spark streaming engine. What it does, it basically breaks this stream of data into, small batches, the continuous batches. Okay, so batches will be like key first batch from 0 to 1 second. Okay, then the second batch will be from 1 to 2 seconds, then 2 to 3 seconds. Okay, so likewise, your stream of data will be divided into batches, continuous batches, and these continuous batches will go to your Spark engine. Spark engine basically your processing environment of the Spark, and this will process the stream of data, and the data will eventually also be generated in the form of small streams. Okay, now, this small streams, you can, either store it in your HDFS, okay, or your Cassandra database or whatever. Okay. So this is how your Spark streaming actually works. Okay. So see, it's not like a यू कैन से ये जो प्रोसेस है ना, देखो बैचेस में फिर भी कन्वर्ट हो रहा है. ओके, सो दिस माइट बी कंफ्यूजिंग दैट हम मैप प्रोड्यूस में भी तो बैच प्रोसेसिंग कर रहे हैं, एंड अगेन वी आर डूइंग द सेम इन द इनपुट स्ट्रीम, बट देयर batch processing is different. Here it is called as micro batching. Okay, it is called as micro batching, and in micro batches the input is converted. These are the micro batches. Okay, seconds by seconds the batches are being converted, and Spark engine then processes the data and also converts the data in the form of batches, right? So this is how your Spark processes. So I gave you an example yesterday that how the let's say your T20s or जो भी matches होते हैं, okay, matches, yeah, any other thing as well. Okay, not just in terms of your sports only. There are other ways where streams of data is being generated, and those are being processed with help of Spark. Okay,
So this is your Spark streaming, another component of your Spark. Then comes your Spark. Hello. Yes. Oh, what is the significance of converting the processed data into batches? Ma'am, significance is that, let's say your data is, continuously flowing, but you need to have you need to process the data in some particular chunk, no? So that's why. But in MapReduce, what we were doing, we were already defining the batches in the form of the blocks. Okay, but here what is happening, the data is continuously generated. So here I am what we are doing, asking, I am micro batch. asking the batches for processed data, the last step. Okay, process for the last step. Yeah. See, since the data is already processed in the in the batch form na, so that's why the batches are being converted. Let's say this is 0 to 1 batch. Okay, so this 0 to 1 batch ka jo data processed output hai, that will also be in this batch format. Okay, eventually what you can do is, then you can, combine these all batches, and you can store it in your HDFS, or if you want to further analyze it to other system, other engine or something, or you want to store it in your Cassandra database or any other database, that we can then do. Okay. Okay. Thank you. Yeah, because input is in the batches form, so that's why the output is also generated in the batch format, because one by one Spark engine will be processing the batches, right? Yes, yes. I thought we are converting it into the processed data is converted into batches. No, no, no. Only the Spark engine itself is doing that. Okay, okay, okay. Yeah. Okay, thank you. Yes. So, then comes here the the another component, which is your Spark ML libraries. Now, what these ML libraries basically, see, it's like if you see around you, be it your mobile phones, be it your laptops, be it your IoTs and everything, your sensors. Okay, so all these devices are generating your data, right? So if we talk about just in terms of your phones, okay, so can you can very well understand that your phone is just the product of machine learning and AI. Okay, because whatever, be it your in terms of your Samsung, your in terms of your Apple, you have Alexa and your Bixby for Samsung, and other features as well, not these voice uh, not just these voice assistants, but other features as well with your, with respect to your mobile phones. These are all being developed with respect to analyzing the data and doing machine learning over it. Okay, various algorithms are being created and generated to basically learn through the user's feed, and then eventually provide suggestions to the user. Okay, you can very well understand it through your if you are using Instagram, the kinds of reels you are watching, or the kinds of pages you have liked, or the people you are following. Based on that data, you are being fed with certain specific type of data. Let's say if you are surfing through your YouTube, okay, so the kind of videos you are continuously watching, or um, have watched, so based on that, the YouTube is providing you suggestions. Okay, how this is being happening, because in the back end, some algorithm is working and it is learning that this particular user is interested in such kind of content, so they are pushing only those kind of content. Okay, very rarely it happens that some different video is being pushed to the user, irrespective of his or her likes. Okay, very rarely it happens. Okay, so likewise, if everywhere you can see machine learning, so
there was the requirement that we should have a machine, a capability engine who can process machine learning as well, who can do machine learning as well. Okay, नहीं तो क्या होता था, अगर let's say मुझे Hadoop के respect में या कोई और respect में अगर मुझे machine learning apply करना था, तो we need to have processing the data, like we would be cleaning or refining the data with some other engine, and using machine learning engine for like for doing machine learning we were using different engines. Okay, so that was the conflict area where कि हमें डेटा को प्रोसेस डील करना है, एक डेटा को एक सर्टेन रिफाइंड पोजीशन पे लेके आना है सो दैट डेटा कैन बी यूज्ड फॉर मशीन लर्निंग। तो उसके लिए हम सेपरेट इंजन के लिए है ना इंजन यूज कर रहे थे, और मशीन लर्निंग के लिए हम मशीन लर्निंग लर्न करने के लिए वी वर यूजिंग डिफरेंट engines. Okay, तो उस केस में भी हम प्रॉब्लम ये फेस कर रहे थे, देयर शुड बी एन इंटरेक्शन बिटवीन बोथ द engines, right? So we were eventually facing the complexity of the model, right? So Spark ML libraries solve this situation where you just have to have the data with you. Okay, and with machine learning libraries there was full support to do every kind of low level machine learning which we can do. Okay, now these libraries, machine learning libraries, can be like with respect to your supervised learning. Okay, there are three types of machine learning: supervised, unsupervised, okay, and reinforcement learning. Okay, reinforcement learning. So these learnings have various algorithms, under them, and these algorithms are being used to basically train the models and generate different models based on what kind of data we need to process. Okay, so these libraries hold all these different learnings and the algorithms under them, and if we want to use these algorithms, we can easily do through machine learning libraries in Spark. They are simple to use, scalable, and compatible with various programming languages. Okay, since Spark is a polyglot, okay, so you can use R, you can use Python, you can use Scala, you can use Java. Okay, so you have various programming language support as well. Machine learning libraries is the development and deployment of scalable machine learning algorithms. So you can develop and deploy algorithms very easily. Okay, because you have the environment, you have a proper, API support so that you can, do the machine learning over your data. So all the kind of algorithms like clustering, classification, collaborative filtering are being implemented under this machine learning libraries. Okay. So there are various libraries under machine learning. Since we'll be doing like ahead, like as we go ahead with the course, we'll be having data science, right? And there we'll be very, in detail, we'll be discussing about machine learning and what these three learnings are. So there you'll have a better understanding that how these libraries are, what are the different libraries which are being used for machine learning and everything. So that there you can have a idea, and once you get the idea from there, and if you will try to relate with this with this Spark ML libraries, you will easily be able to understand that how we are basically incorporating that and what these learnings we are doing actually. Okay, सो स्पार्क एमएल लाइब्रेरीज, आप मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज के थ्रू आप स्पार्क आप अपने डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, स्पार्क प्रोवाइड्स यू विद दैट फैसिलिटी, राइट? Then comes your graphics. Okay, this is another component. It's a very interesting component. It was very
it was later introduced. Like initially, it was not the part of Spark. This graphics and Spark streaming. Okay, these two things were not the part of Spark version 1. Okay, later they were being added. So, what is this graphics? So, I told you, or I don't know if you remember that I showed you yesterday that what are graph databases, right? Does everyone remember that? Yes. Yes, ma'am. Yeah. So, we discussed yesterday that what kind of graph databases are actually okay. So, with respect to your social media, these are the data is being stored in the form of graph databases. Okay, majority of them basically do that. Okay, not all, majority of them. Okay, so let's say if you have that type of data and you need to you need to process that data. So Spark is with this graphics component in Spark, you can process graphs, and graph parallel computations can be done. Okay, you can process those data where you are a user, you have so many friends, you do so many posts, you do like some pages and comments of your friends or other thing, you do some comments and everything, all these activities which you are doing, and related to that, what is actually happening, okay, what is the result. So it basically establishes the relation, so this relation can be easily processed. Okay, graph unifies extract, transform, and load. Okay, so you can extract the data, you transform you transform or process the data, and you load it again. Okay, exploratory analysis and iterative graph computation. Iterative, like multiple times a particular graph is being analyzed and processed within a single system. Since Spark is the component which is having this, so in a single system, we can do all such kind of activities with respect to graph databases. Then Spark Graphics provides comparable performance of the fastest specialized graph processing system. Okay, so with respect to other processing environments, Spark is very much, fast, or you can say it provides a competitive environment. Okay, it is very well in the competition with other graph processing units. Okay, so, Spark also provides such graph capabilities of processing graph databases, right? So we have this component. So all these components, graphics, ML libraries, streaming, SQL, and code, all these are the components of Spark, right? So let's move ahead with the architecture. How Spark is basically doing the processing. Okay. So, acha, under before going to this Spark architecture, can anyone tell me what is the role of yarn? Resource management. Yes, resource management, uh, and with help of yarn, what other capabilities we had with respect to Hadoop? Single point of failure is removed. Single point of failure is removed. It keeps track of log data. Yes, it does keep log data. No, that is being done by the name node itself. Yarn is not doing that. See, also एक चीज आप लोग मिस कर रहे हो. Yarn के introduce होने से what other benefit, or what other benefit we got was that we were able to use other frameworks for processing. MapReduce तो था ही,
बट वी वर एबल दैट कि हम मैप रिड्यूस के अलावा फ्रेमवर्क्स जो अगर हमें यूज करने हैं वो भी यूज कर सकते हैं। था कि नहीं ये पॉइंट? आपने देखा होगा जब हमने डिस्कस किया था हडूप वर्जन 1, तो हम एक जो चीज लैक कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि मैपरेड्यूस के पास ही रिसोर्स मैनेजमेंट था और मैपरेड्यूस के पास ही प्रोसेसिंग का काम था। ठीक है, उससे हो क्या रहा था, मैपरेड्यूस ओवरलोड हो रहा था। ऑल्सो प्रॉब्लम वाज दैट कि क्योंकि रिसोर्स मैनेजमेंट भी मैप रिड्यूस कर रहा था, तो हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था मैप रिड्यूस के अलावा जिसके थ्रू हम प्रोसेसिंग कर सके डेटा की। राइट? एवरीवन रिमेम्बर दैट? Yes, ma'am. ना? अच्छा, फिर हडूप वर्जन 2 में हमने क्या किया, हमने यान इंट्रोड्यूस कर दिया। यान इंट्रोड्यूस करके हमने क्या किया, हमने रिसोर्स मैनेजमेंट वाला काम मैपरेड्यूस से सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि हम मैपरेड्यूस के ऊपर रिलाइड नहीं रहे। हमने क्या किया कि ठीक है, HDFS हम यूज कर लेंगे, हम रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए यान को यूज कर लेंगे, और प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास मल्टीपल स्कोप्स हो गए थे। ठीक है, और हमने डिस्कस भी किया था कि मल्टीपल स्कोप्स कैसे, आपको आपको अदर फ्रेमवर्क्स यूज करने हैं। लेट्स से स्पार्क एक फ्रेमवर्क है, उसमें उसमें क्या कहते हैं, स्पार्क दिस Apache Storm was another framework. Mahout was another framework which we were able to use to process the data. Okay, तो क्योंकि हम अदर फ्रेमवर्क्स यूज कर पा रहे थे, वी वर एबल टू इनकॉर्पोरेट स्पार्क विद हडूप। ओके, तो उस केस में क्या हुआ, HDFS जो कि हमारा स्टोरेज स्पेस है, वो स्पार्क यूज करता है डेटा को पिक करने के लिए, और प्रोसेसिंग करने के लिए स्पार्क का अपना इंजन है। ओके, ऑल्सो हडूप, जैसे कि हमने डिस्कस किया था पहले, कि मास्टर स्लेव एनवायरनमेंट में वर्क करता है, मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर है। ठीक है, सिमिलरली स्पार्क का भी अपना एक मास्टर एंड वर्कर नोड या स्लेव नोड्स का आर्किटेक्चर है। ठीक है, तो हियर व्हाट वी से कि हियर वी हैव अ ड्राइवर नोड। ठीक, तो ये ड्राइवर नोड क्या करती है बेसिकली, लेट्स से आपने कोई भी इंस्ट्रक्शंस लिखे, जैसे हम मैप रिड्यूस में नहीं करते थे, हम प्रोग्राम लिखते थे, हम उसकी जार फाइल बनाते थे और फिर हम उसे एग्जीक्यूट करते थे। ठीक है, लाइकवाइज कि आपने कोई एक फाइल, एक प्रोग्राम जनरेट किया है, वो प्रोग्राम पहले जाएगा आपके ड्राइवर नोड के पास। ठीक है, ड्राइवर नोड क्या करेगा, स्पार्क कॉन्टेक्स्ट के थ्रू उस उस क्या कहते हैं, उस कोड को एनालाइज करके एंड इट विल क्रिएट RDDs। ठीक है, वो RDDs क्रिएट करेगा। ठीक है, तो जैसे ही आप कोई एक प्रोग्राम सबमिट करते हैं, सबसे पहले स्पार्क कॉन्टेक्स्ट एक्टिवेट होता है। ठीक है, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब भी आप देखोगे कि हम सबसे पहले स्पार्क कॉन्टेक्स्ट जनरेट करते हैं। स्पार्क कॉन्टेक्स्ट जनरेट करने का मतलब ये है दैट वी आर ट्राइंग टू create the RDDs. Okay, we are trying to generate certain RDDs with respect to data or whatever kind of steps we are taking. Okay, हम data capture कर रहे हैं या हम कोई और methodology apply कर रहे हैं, according to that Spark context will be creating the RDDs. Now, what will happen once these RDDs are created? The cluster manager will be activated. Now, this cluster manager क्या करता है? वही resource management का काम कर रहा है. It will see that okay, these many RDDs are there. Now, they need to be processed. So, cluster manager इन RDDs को
ये वर्कर नोड्स के अक्रॉस स्प्रेड करता है। ठीक है, आपके मल्टीपल वर्कर नोड्स होंगे, उन पे ये स्प्रेड आउट होगा। ठीक है ना, जैसे ये आरडीडीज वर्कर नोड्स पे पहुंचते हैं, वर्कर नोड पे जो एग्जीक्यूटर्स हैं, ये एग्जीक्यूटर्स एनालाइज करते हैं आरडीडीज को एंड दे आस्क फॉर द कंटेनर्स। ओके, नाउ कंटेनर्स से आपको याद आया होगा कि हम यान में भी कंटेनर्स, रिसोर्स नेगोशिएशन में यही होता था, नोड मैनेजर कंटेनर्स इन्वोक करता था आपके रिसोर्स मैनेजर से, करता था कि नहीं? यस और नो? Like similarly, your executor also asks for the containers to your cluster manager. Now, once this cluster manager gives the containers to the worker nodes, now the data will be processed, the RDDs will be processed, and the output will be generated. Okay, and those outputs will be passed to your Spark context. Okay, so likewise your architecture basically works. Okay, तो cluster management का काम वही है, cluster management manager का, कि it will see that the containers are being provided. Okay, executors are performing their operation, and once the executors are done with their work, they will be submitting the result to the Spark context through cluster manager. Okay, so in this fashion your Spark architecture basically works. Okay, got the point? Any confusion here? वो हडूप क्लस्टर में जैसे यान शेड्यूल टास्क करता था क्लस्टर नोड्स पे, डिफरेंट क्लस्टर नोड्स पे, मुझे शायद याद है अभी। तो इसमें यान में आपने जैसे अभी बताई, एक बार रिपीट कर देंगे मैम, इस शेड्यूल टास्क से होगा इसमें। Okay, basically जैसे आपने बता क्लस्टर में डिवाइड करेगा जो डिफरेंट वर्कर्स पे। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि आपका, देखो वर्कर्स पे, डिफरेंट वर्कर्स पे क्यों करेगा? क्योंकि आपका जो एक्चुअल डेटा है, वो आपका डेटा तो वर्कर नोड्स पे ही डिफाइन स्टोर होता है। जैसे कि आपके हडूप में था, आपका नेम नोड था और उसमें आपके पास मल्टीपल डेटा नोड्स थे। ओके, नाउ सिमिलरली इज द सिचुएशन हियर, क्योंकि स्पार्क भी आपका HDFS ही यूज कर रहा है। अब HDFS यूज कर रहा है तो इसका मतलब यही हुआ कि आपके डेटा नोड्स पे आपका डेटा स्टोर्ड है। ठीक है, सो दोज डेटा नोड्स आर दीज वर्कर नोड्स ओनली। ओके, यहाँ थोड़ा टर्मिनोलॉजी चेंज हो रहा है, बट दी वर्कर नोड्स itself these are data nodes only which are holding your data. ठीक है, आरडीडीज के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम जो भी हमने डेटा और यू कैन से द फंक्शनैलिटी वी आर कैप्चरिंग, ये फंक्शनैलिटी हम क्लस्टर मैनेजर के थ्रू हम स्प्रेड आउट कर रहे हैं वर्कर नोड्स पे। ठीक है, अब ये वर्कर नोड्स क्या करेंगे, ये वर्कर नोड्स एनालाइज करेंगे कि ये आरडीडीज हमारे पास आए हैं, these are the tasks we need to perform, then the executors are there on your worker nodes. Now these executors, what they do is they ask for the containers, क्योंकि इन्हें execute करना है task को, so they need some containers, they need some resources to basically do the processing. Okay, now these resources are your RAM, your CPU core, your network bandwidth, or whatever kind of resources you need, right? So all these resources are being provided by this cluster manager. Okay, now this cluster manager is your yarn only. Okay, क्योंकि रिसोर्स नेगोशिएशन के लिए तो हमारे पास एक ही चीज है ना, यान। ठीक है, तो ये क्लस्टर मैनेजर यान ही है जो कि आपके सारे कंटेनर्स और सारे रिसोर्स मैनेजमेंट का काम दिख रहा है। ठीक है, अब ये कंटेनर्स आपके वर्कर नोड्स को प्रोवाइड होंगे। वंस दीज कंटेनर्स आर प्रोवाइडेड, दीज एग्जीक्यूटर्स विल एग्जीक्यूट द टास्क एंड द फाइनल रिजल्ट विल बी देन सेंड टू योर स्पार्क कॉन्टेक्स्ट। Okay,
Okay. Okay, so now now the picture is clear. Yes. Okay. So this is how your Spark architecture actually works. Okay. See, when we'll do the programming now, तब भी आपको काफी हद तक कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी कि how the processing is basically carried out. Okay. So for now, this is the Spark architecture. Okay. Now let's move ahead. Let's discuss the Spark modes of operation. In how many modes the Spark basically operates. Okay, so the one of the mode is your standalone mode. Standalone mode हमने और कहाँ यूज किया था? Yes, you are right now using that standalone mode. Hadoop के केस में आप यूज कर रहे हो ना standalone mode, Cloudera के केस में, Cloudera image के थ्रू. Yes or no? अच्छा ये बताओ, sudo jps कमांड से क्या होता है? आप HDFS कमांड्स में हम एक कमांड चलाते हैं sudo jps. It gives the daemons present in HDFS. Yes, it tells us the daemons which are present in the HDFS, right? So, जब हमने Cloudera image के ऊपर जब आपने ये वाली कमांड चलाई थी तो आपको सारे daemons दिखे होंगे. आपको name node दिखा होगा, आपको data node दिखा होगा, आपको ये क्या कहते हैं रिसोर्स मैनेजर दिखा होगा, आपको नोड मैनेजर दिखा होगा, राइट? ऑल दीज डेमन्स आपको दिखे होंगे. ठीक है, ये सारे डेमन्स दिखने का क्या मतलब है? वो जो क्लाउडेरा की इमेज आप यूज कर रहे हो, दैट्स अ स्टैंड अलोन इमेज. स्टैंड अलोन का मतलब ये है कि जिस सिस्टम पे आप उसको यूज कर रहे हैं वही आपका नेम नोड है एंड वही आपका डेटा नोड है. ठीक है, सो अ सिंगल क्लस्टर और सिंगल सिस्टम क्लस्टर नोड हो गया ये आपका स्टैंड अलोन. ओके, नाउ एक तो ये हो गया मोड. तो स्पार्क भी आपका इसी तरह से वर्क करता है. ठीक है, आप स्पार्क को भी एज अ स्टैंड अलोन मोड में यूज कर सकते हो. तो आप देखोगे कि जब क्लाउडेरा इमेज के थ्रू हम स्पार्क पे वर्क कर रहे होंगे तो देयर दिस स्पार्क विल बी यूजिंग द स्टैंड अलोन एनवायरनमेंट जो कि क्लाउडेरा में सेट है. ठीक है, Spark can also work in the cluster mode. Okay, and for cluster mode, Spark can be used with Yarn. So Spark on Yarn का मतलब ये है कि Spark on Yarn में आप HDFS as the storage device ले रहे हैं, storage space ले रहे हैं, and आप processing के लिए Spark use कर रहे हो, और resource management के लिए आप Yarn use कर रहे हो. Spark Mesos is also a cluster environment only, a manager for the cluster environment, and there you are using Spark. So this you can Mesos is a cluster management or you can say framework, okay, which can be used with respect to Spark for analyzing the data, and with Spark Kubernetes as well. We this the situation is same. Okay, so likewise you can use Spark in the cluster mode. Okay, ऑल्सो जैसे अगर लेट्स से स्टैंड अलोन मोड की ही बात करें तो आप ऐसे भी कर सकते हो. जैसे आप अभी क्लाउडेरा यूज कर रहे हो, ठीक है, क्लाउडेरा इमेज पे आप स्पार्क को यूज कर सकते हो, बट क्योंकि वो क्लाउडेरा इमेज क्वाइट ओल्ड है तो उसमें आपको ना स्पार्क का बहुत पुराना वर्जन मिलेगा. ठीक है, और पुराना वर्जन मिलेगा तो इसलिए आप जब पाई स्पार्क के रिस्पेक्ट में प्रोग्राम्स करोगे तो
you might face some problems. Okay, some commands will not work actually. Okay, तो उस केस के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हो कि आप लोगों ने वर्चुअल मशीन वर्चुअल VMware ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है. What you can do that you can install Ubuntu, any kind of Linux on your VMware. ओके, उसकी इमेज को आप अपने VMware पे डालो और फिर उसमें स्पार्क इंस्टॉलेशन कर दो. ठीक है, तो वो भी एक आपको एक स्टैंड अलोन एनवायरनमेंट मिल जाएगा, बट उसमें फायदा क्या होगा कि आपको लेटेस्ट स्पार्क वर्जन मिल जाएगा. ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल, बट उस केस में आपका जो बेसलाइन जो स्टोरेज स्पेस होगा वो आपके उबंटू मशीन का वो फाइल सिस्टम को यूज करेगा. ठीक है, so I'll send you the resources for trying that कि आप एक ubuntu machine के ऊपर ubuntu environment के ऊपर आप अपना spark installation कर सकते हो. ठीक है, you can try out that those things as well. तो उससे क्या होगा, आपका spark अगर आपको और explore करना है further, you want to do some project over spark, कोई एक छोटा सा project आप अगर run करना चाहते हो, so for that it will be very helpful कि आप अपना एक अलग से स्पार्क का सेटअप करोगे जो कि लेटेस्ट होगा. तो दैट विल बी इजी फॉर यू कि आपके सारे जितने भी रिक्वायर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप कोड्स लिख रहे हो, दोज विल बी वर्किंग. ओके, क्लाउडेरा में ये थोड़ा आप कंस्ट्रेंट फील करोगे. ठीक है, मैं इसलिए आप लोगों को पहले बता रही हूँ बिकॉज वी आर यूजिंग क्वाइट ओल्ड इमेज फॉर क्लाउडेरा. इट्स अ 2017 इमेज. ओके, सो तब से लेके अब तक स्पार्क काफी हद तक चेंज हो चुका है, राइट? योर स्पार्क स्ट्रीमिंग इज इंट्रोड्यूस्ड, योर स्पार्क ग्राफिक्स इज यूज्ड इंट्रोड्यूस्ड. ओके, सो दैट वी कैन डू. ओके, सो आई विल प्रोवाइड यू दी सोर्सेज, आप एक बार उनको ट्राई जरूर करना. ओके, दैट विल हेल्प यू आउट. ऑल्सो एक और हमारे पास तरीका है कि आप स्पार्क इंस्टॉल नहीं भी करना चाहते हैं आप अपने सिस्टम पे, यू कैन यूज गूगल कोलैब. आई होप यू आर अवेयर ऑफ गूगल कोलैब. Yes, ma'am. ओके, अगर नहीं तो I'll just show you. Okay, yeah, this Google Collaboratory. Okay, so here what you can do is you can create files here. You can use Spark here as well. बट यहाँ पे अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप पाइस्पार्क स्काला दोनों बहुत इजीली यूज कर सकते हैं. एंड इट इज गुड फॉर लाइक, क्योंकि ये पूरा जो कोलैबोरेटरी है, दिस इज बीइंग इट्स अ वेरी वेल पाइथन रिच एनवायरनमेंट. ओके, तो आपको जो भी मशीन लर्निंग करना है, डेटा साइंस करना है, यू कैन इजीली डू विद दिस गूगल कोलैबोरेटरी. ओके, सो you can use that this as well. Okay, but जो हम basic queries कर रहे होंगे Spark की, those will those I will say that don't try those here, क्योंकि उसके लिए हम environment HDFS का use करने वाले हैं. ठीक है, और यहाँ HDFS होगा नहीं. ठीक है, so that is another thing I wanted to tell you. Yes, someone saying something? So these are the different modes in which your Spark can be used. Then comes your Spark RDDs. The very you can say the uh, everything which you do in Spark is basically translated first with respect to RDDs, and then it is being processed. So these are your these you can call it you can understand them, or you can relate them through your data types. ठीक है, कि जैसे हर लैंग्वेज में we have certain data types, to handle the data and to basically understand the nature of the data. Or you can say with respect to Java, you can say these are objects. Okay, so everything which is being done in Spark is through RDDs.
कि हम RDDs के थ्रू ही हम डेटा को प्रोसेस करते हैं, ठीक है। Now what these RDDs are? These are immutable distributed collections of objects. Okay, immutable basically means that once an RDD is being created, you cannot make any changes. Okay, यानी कि एक बार अगर आपने एक RDD क्रिएट कर दिया, देर इज नो स्कोप कि आप इसमें कोई और चेंजेस परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। आप कर क्या सकते हो, इस RDD से दूसरी RDD जरूर बना सकते हो, if you want that there needs to be some other things, या कोई और changes हैं, इस RDD से दूसरी RDD जरूर create कर सकते हैं, but आप इस RDD को modify नहीं कर सकते, ठीक है। Each data set in RDDs is divided into logical patterns. Okay, so whatever data set or whatever data your RDDs are holding, they are divided into a logical pattern. Basically, they are dealing with your data in a very logical way, in a very organized way, right? RDDs can also be cached and manually partitioned. So cache basically means हमने फीचर्स स्पार्क के फीचर में पढ़ा था कि स्पार्क आपके डेटा को कैश करने में हेल्पफुल रहता है, ठीक है। हाउ, और हेल्पफुल क्या, सॉरी, कैश करना अलाउड है स्पार्क में। तो कैशिंग से क्या मतलब है, बेसिकली होता क्या है, लेट्स से आपने एक RDD क्रिएट किया, इस RDD को प्रोसेस करने के बाद एक और कोई एक RDD बना, ठीक है। देखो, एवरीथिंग जो भी हम डेटा प्रोसेस कर रहे हैं वो RDD की टर्म्स में ही हो रहा है, ठीक है। तो आपने कोई डेटा प्रोसेस किया, ठीक है, तो वो जो RDD है, वो जो स्टेज है जो आपने प्रोसेस करी है, ये जो आपने RDD जनरेट करी है इस डेटा को प्रोसेस करने के बाद, आप इस RDD को कहीं भी जाके अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। आपकी फिजिकल मेमोरी है या आपकी रैम है, आप उसमें स्टोर कर सकते हो, ठीक है। फायदा क्या होगा इससे, फायदा ये होगा, जैसे कि हम मैप रिड्यूस में मैप टास्क करते थे और एक रिड्यूस टास्क करते थे, अगर मुझे मैप टास्क का जो इंटरमीडिएट की वैल्यू पेयर था, वो अगर मुझे कहीं स्टोर करना है या वो मुझे चाहिए किसी और प्रोसेस के लिए या किसी लेटर यूज के लिए, सो आई वाज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दिस थिंग, ओके। बट यहाँ पे क्या है कि लेट्स से अगर मेरे पास प्रोसेसिंग का एक पूरा साइकिल है, मल्टीपल ऑपरेशंस आर हैपनिंग वन बाय वन, ओके। अगर मुझे इस स्टेज का डेटा अगर स्टोर करना है कहीं कहीं पे, या इस स्टेज में जो मुझे आउटपुट मिल रहा है ये मुझे फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए चाहिए, सो नाउ व्हाट आई कैन डू दिस, मैं इस RDD को अपने किसी भी स्टोरेज स्पेस में या रैम में कहीं जाके उसको स्टोर कर सकती हूँ, ठीक है, सो दैट आई कैन इन फ्यूचर हैव द रेफरेंस ऑफ दिस RDD, ठीक है। Manually partitions, let's say you can also divide or do the partitioning of the RDDs, okay. So that is also possible with respect to Spark RDDs. Then Spark keeps persistent RDDs in memory for by default, okay। Now what these persistent RDDs are, वो मेमोरी में बाय डिफॉल्ट उनको रखता है। persistent RDDs are कि जैसे give me a second please. Asha, okay. Persistence is yeah.
Okay, persistent RDDs are basically, you can either say persisting or caching of the RDDs. This is one and the same thing. दोनों को, let's say कोई भी डेटा को हमें स्टोर करना है, तो यहाँ पे हम स्पार्क में दो फंक्शन यूज करते हैं, कैश एंड persist. दोनों का काम यही है कि आप अपने RDDs को स्टोर करके रख सकते हो. इंटरमीडिएट रिजल्ट जो है आप उसे स्टोर कर सकते हैं, एंड देन यू कैन यूज इट फॉर योर later references. Okay, so keeps these persistent RDDs in memory. So by default आप उसे अपने memory में रख सकते हैं. That means आप अपने RAM में persistent RDDs को by default रख सकते हो. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है कि होल्ड ऑन फॉर क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम इतनी सारी चीजें, देखो हम मेमोरी में हम प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं, मेमोरी में हम पर्सिस्टेंट RDDs भी रख रहे हैं, ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्यों क्यों कि हम मेमोरी को ओवरलोड नहीं कर रहे, हम क्या मेमोरी ड्रेन आउट का प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे? इज इट अ वैलिड क्वेश्चन? यस एवरीवन? यस. Yes. ऑन द फर्स्ट प्लेस ये किसी के दिमाग में आया था अभी तक कि हम मेमोरी, लेट्स से हम रैम को इतना एक्सटेंसिवली यूज कर रहे हैं, हम इवेंचुअली हमारा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को स्लो नहीं कर लेंगे? क्वेश्चन किसी के दिमाग में आया भी था? देखो ऐसा होता है, डेफिनेटली इट विल बी हैपनिंग, क्योंकि भाई ऑलरेडी आप अपना आप प्रोसेसिंग उसमें कर रहे हैं अपने रैम में, रैम के थ्रू, ठीक है, एंड ऑलरेडी यू आर यूजिंग अ ह्यूज डेटा सेट. ओके, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा में आप डील कर रहे हो, ठीक है, तो इट्स ऑब्वियस दैट मेमोरी विल गेट ड्रेन आउट. ओके, मेमोरी का एक बल्ज है, वो आप फेस करोगे. ऊपर से आप क्या कर रहे हो, आप पर्सिस्टेंट RDDs को कैश भी कर रहे हो अपने रैम में, ठीक है. तो स्पार्क क्या करता है इस केस में? स्पार्क इन यू कैन से वो पीरियोडिकली कह सकते हैं या टाइम टू टाइम स्पार्क हैज इट्स मैकेनिज्म कि वो देखता है, जैसे ही वो उसे लगता है कि मेमोरी बल्ज इज अकरिंग, व्हाट इट डज इज कि वो जो पर्सिस्टेंट RDDs हैं वो उनको मूव कर देता है आपके फिजिकल स्टोरेज में, ठीक है. तो उससे क्या होगा कि आपका रैम अगेन एम्प्टी होगा, अगेन फ्री होगा, एंड यू कैन यूज इट फॉर योर प्रोसेसिंग एनवायरमेंट, ठीक है. तो दिस मैकेनिज्म इज बीइंग फॉलोड बाय स्पार्क. ये आप नहीं कर रहे, बट ये स्पार्क का खुद का मैकेनिज्म है कि वो बैकएंड में टाइम टू टाइम रैम को इतना केपेबल और क्लीन आउट करता रहता है, so that you don't, sorry, you don't face some kind of constraint with respect to processing, क्योंकि मेमोरी आपके रैम ओवरलोड हो गया, ठीक है. ऑल्सो स्पार्क व्हाट इट डज इज कि लेट्स से कोई एक ऐसी RDDs है या कोई ऐसी पर्सिस्टेंट RDD आपने बहुत टाइम तक अपने रैम में रखा हुआ है, एंड स्पार्क सीज दैट देयर इज नो यूज फॉर दैट. ओके, you are not continuously using it or it is not being used for long time. उस केस में वो उसको रैम में, सॉरी, मेमोरी, फिजिकल मेमोरी में स्टोर करेगा. जो कि फ्रीक्वेंटली यूज्ड RDDs हैं या कैश्ड RDDs जो आपने जनरेट करे हैं रैम में, वो उन्हें रिमूव नहीं करेगा उस केस में, क्योंकि आपका सिस्टम ऑलरेडी उन्हें यूज कर रहा है पीरियोडिकल बेसिस पे, फ्रीक्वेंट बेसिस पे. ओके, सो इट विल मैनेज एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द uses of the RDDs which are basically being cached in your RAM. Okay. Then Apache Spark evaluates RDDs lazily. ठीक है, अब देखो अगेन एक कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट है यहाँ पे कि RDDs लेजीली इवेलुएट होते हैं. अब
क्यों हम इतने टाइम से बात कर रहे हैं कि स्पार्क इज बेसिकली 100 टाइम्स फास्टर, इट इज वेरी क्विकली प्रोसेसिंग द डेटा, वो हमारा जो टाइम लैग वाला इशू है उसे रिजॉल्व कर रहा है। एंड नाउ हियर वी आर सेइंग दैट आरडीडीज आर लेजीली इवेलुएटेड। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि आरडीडीज के रेस्पेक्ट में दो एक्शंस और यू कैन से दो operations perform होते हैं. One is the transformation and another one is the action. Okay, because of these two operations, we say that RDDs are lazily evaluated. I'm not describing these two operations right now, but just for your knowledge, I'm saying that because of these two operations, RDDs are said to be lazily evaluated. Okay, we'll understand that why because of these two operation lazy evaluation is there. We'll discuss it further when we discuss these two operations. Okay, but before that we'll understand how Spark RDD solve the problems. There are two problems: synchronization barrier between map and reduce tasks. Okay, data sharing is slow with respect to MapReduce. Okay, and all these two problems are being solved by the RDDs. तो पहली प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं कि आइटरेटिव ऑपरेशंस हैं, आपके आइटरेटिव ऑपरेशंस हैं, तो MapReduce कैसे वर्क करता है और स्पार्क उस रेस्पेक्ट में कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो आइटरेटिव ऑपरेशंस है। आइटरेटिव मतलब आपका जो ऑपरेशन है वो मल्टीपल लूप्स में वर्क करेगा। ठीक है, वो मल्टीपल लूप्स में आपका जो प्रोसेसिंग है वो अकर करेगा। तो होगा क्या कि आपने स्टोरेज MapReduce के केस में क्या होगा, आपने HDFS से डेटा रीड किया, आपने MapReduce परफॉर्म किया, आपने राइट किया, फिर वापस वो HDFS पे स्टोर हो जाएगा। देन अगेन वो रीड होगा, अगेन प्रोसेसिंग होगी, अगेन वो राइट करेगा। So you can see there are multiple read-write operations which are being performed. Okay. और हर बार क्या हो रहा है, हम स्टेबल स्टोरेज डिवाइस के ऊपर हम डेटा को राइट कर रहे हैं। तो यू कैन सी द टाइम विच वी आर वेस्टिंग हियर, द टाइम कंज्यूम्ड हियर टू राइट द डेटा एंड टू रीड इट अगेन। ओके, और इसी रेस्पेक्ट में अगर आपके आइटरेटिव ऑपरेशंस हों तो आप you can understand that how much time will be consumed in these read write operations. Okay, so this was the problem with the MapReduce when we are doing iterative operations. Okay, अब स्पार्क के रेस्पेक्ट में क्या होता है, हमने एक बार HDFS से डेटा उठाया, ठीक है, हमने प्रोसेसिंग किया, तो प्रोसेस करने के बाद जो डेटा है या जो रिजल्ट है, storing that in the memory, okay, the RAM. Okay, now once the data RAM में स्टोर होता है तो RAM से it is very easy to read the data. Okay, so that's why जब हम iterative operations कर रहे हैं, हम multiple loops में data को process कर रहे हैं, there this memory is helping us to capture the data quickly. तो eventually आपका जो टाइम यहाँ पे एक तरह से वेस्ट हो रहा था या टाइम कंज्यूम हो रहा था रीड राइट ऑपरेशन में, जो हम स्टेबल डिवाइस पे स्टोर कर रहे थे, वो अब काफी हद तक रिड्यूस हो गया, क्योंकि मेमोरी से आपको रीड करने में कोई इशू नहीं है, क्योंकि प्रोसेसिंग भी तो मेमोरी में ही हो रहा है। ठीक है, तो इट्स रेडीली अवेलेबल टू यू। ओके, सो दैट्स व्हाई Spark is much faster with respect to your MapReduce. Okay, so likewise वो मेमोरी में हर स्टेज पे हर लूप के बाद वो मेमोरी में स्टोर होगा डेटा, आप अगेन दूसरे लूप के लिए प्रिपेयर करेंगे, वो रीड होएगा वहीं से, एंड likewise the iterative operations will be performing. Okay, अच्छा, लेट्स सी कोई इंटरएक्टिव ऑपरेशंस हैं। इंटरएक्टिव ऑपरेशंस मतलब कि देयर इज multiple queries are being running, okay, and there is
there are multiple queries are running. Okay, so what happens is कि let's say कोई आप ये कह लो इंटरैक्टिव ऑपरेशंस जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं आपका पेटीएम. ओके, पेटीएम में क्या होता है, आप आप स्कैन करते हैं क्यूआर कोड या आप नंबर के थ्रू आप पेमेंट करते हैं. ठीक है, सो दैट पेमेंट इज बेसिकली देन गो टू योर बैंक. ओके, और बैंक फिर आपका जो पेमेंट है वो इनिशिएट करता है. ट्रांजेक्शन इज इनिशिएटेड एंड इट establishes द कनेक्शन विद द रेसिपिएंट बैंक. ओके, जो रिसीव कर रहा है पेमेंट को उसके बैंक से वो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करता है. एंड देन once the communication is established, the payment is being executed. Okay, there are multiple set of queries which are running simultaneously. Okay, तो अगर इस तरह का कोई सिचुएशन है तो होता क्या है कि आपने लेट्स से कि आपने स्टोरेज स्पेस से डेटा उठाया, HDFS से रीड किया एंड यू परफॉर्म मल्टीपल क्वेरीज ओवर द डेटा. ओके, अब क्योंकि आपके मल्टीपल क्वेरीज परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, सो व्हाट माइट हैपन इज दैट कि लेट्स से आपकी 10 क्वेरीज थे. ठीक है, 10 क्वेरीज एग्जीक्यूट हो रहे हैं पैरेलल बेसिस पे. बट हुआ क्या उस चक्कर में कि कोई क्वेरीज लेट्स से आपकी फोर्थ क्वेरी और सेवेंथ क्वेरी इज टेकिंग टाइम. ठीक है, बाकी सारी क्वेरीज अपने सेम पेस पे एग्जीक्यूट हो रही हैं बट फोर्थ एंड सेवेंथ क्वेरी इज टेकिंग टाइम. तो व्हाट विल हैपन, ओवरऑल जो ऑपरेशन टाइम है, ओवरऑल प्रोसेसिंग टाइम है, विल आल्सो बी लैग्ड. ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि जितना पूरा टोटल प्रोसेसिंग टाइम था कई बार उससे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है बिकॉज 1 or 2 क्वेरीज कैन बी टेकिंग सो मच टाइम. तो अगर आपकी ऐसे इंटरैक्टिव ऑपरेशंस हैं और अगर आप इस तरह का सिचुएशन फेस करोगे कि आपकी कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर टेकिंग सो मच टाइम, तो ओवरऑल आपका प्रोसेसिंग टाइम इंक्रीज होगा. ठीक है, एंड दैट माइट रिजल्ट यू टू लूज योर you might lose something. Okay, होता है ना पेमेंट में, आपने देखा होगा कि कई बार बैंक्स के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होता है. ठीक है, तो वो है ना आपको एक टाइमर वहां पे दिखाता है. ठीक है, 50 सेकेंड्स का आई थिंक द टाइमर इज. एम आई राइट और रॉन्ग? यस गाइस. टाइमर के बारे में तो ऐसा अंदाजा नहीं है, देखा नहीं मैंने आज Yes, तक. ma'am. Yes. पेटीएम में जब पेमेंट करते हैं कई बार नहीं होता कि वो बैंक आपने इनिशिएट कर दिया पेमेंट बट दूसरे बैंक के साथ है ना कनेक्ट नहीं होता, या कई बार कनेक्शन नेटवर्क प्रॉब्लम होता है तो वो प्रोसेसिंग स्लो हो जाता है और फिर वो एक टाइमर सा आपको दिखाता है राउंड फैशन में. हाँ यस मैम, वो 10 सेकंड्स का कुछ दिखाता है. हाँ 10 सेकेंड्स होता है. दैट वाज आई वाज ट्राइंग टू कंफर्म कि वो 50 सेकेंड्स का होता है या 10 सेकेंड्स का होता है. तो वो टाइमर नहीं दिखाता. तो वही वो चीज है कि आपकी मल्टीपल क्वेरीज है ना एग्जीक्यूट हो रही हैं. आपने पेमेंट इनिशिएट कर दिया, यानी कि आपकी पेमेंट वाली क्वेरी आपने इनिशिएट कर दी. आपने अपना जो भी कोड था वो आपने डाल दिया. ठीक है, 2 क्वेरीज आर. अब जो कनेक्शन स्टैब्लिश होना है आपके बैंक और दूसरे रेसिपिएंट बैंक के बीच में, वो कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा. अब इसका रीजन मल्टीपल हो सकते हैं कि आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी स्लो है या जो रिसीवर का बैंक है दैट इज नॉट एबल टू रिसीव द रिक्वेस्ट एंड एवरीथिंग. ओके, तो वो आपको यहाँ पे आपकी थर्ड क्वेरी वहीं पे स्टिक हो गई. ठीक है, अब उसके बाद आपके है ना अदर क्वेरीज विल आल्सो लाइक पूरा जो प्रोसेसिंग टाइम है आपका पेमेंट को इनिशिएट करने का वो ओवरऑल टाइम टेकिंग हो गया. ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी वर फेसिंग विद रिस्पेक्ट टू मैप रिड्यूस ओनली, कि मल्टीपल अगर क्वेरीज हैं आपके मल्टीपल मैप रिड्यूस फंक्शन, लेट्स से यहाँ पे एक मैप रिड्यूस हो गया, यहाँ का मैप रिड्यूस हो गया,
पर इस थर्ड क्वेरी में आके आपका मैप रिड्यूस इज टेकिंग टू मच टाइम, तो आपका ओवरऑल प्रोसेस टाइम है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। एंड इवेंचुअली यू आर फेसिंग द इशू कि आप है ना अपने डेटा को जल्दी प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपका ओवरऑल प्रोसेसिंग फेलियर ही आप कई बार फेस करते हैं, ठीक है। इस प्रॉब्लम को स्पार्क किस तरह से सॉल्व करता है? स्पार्क क्या करता है, वो एक बार ना स्टोरेज से डेटा उठाया, डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी में उस डेटा को वो प्लेस करता है, एंड अब वो सारी क्वेरीज अपने उसमें परफॉर्म करता है। एंड हियर व्हाट विल हैपन, क्योंकि हमने एक डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी स्पेस में हमने डेटा को स्टोर करके रखा है, तो एक तो बार बार हमें स्टेबल स्टोरेज से कनेक्शन करने की जरूरत नहीं है, ऑल्सो क्योंकि डेटा रेडिली अवेलेबल है, तो हमारी क्वेरीज जो हैं वो काफी जल्दी एक साथ प्रोसेस होते हैं। थोड़ा बहुत माइन्यूट ऊपर नीचे टाइम हो सकता है, बट इट इज नॉट लाइक कि थर्ड क्वेरी के चक्कर में पूरा ओवरऑल प्रोसेसिंग टाइम ही इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो ऑब्वियसली दिस माइट बी द केस दैट कुछ क्वेरीज जल्दी हो सकती हैं, कुछ क्वेरीज कुछ सेकंड बाद हो सकती है, बट इट्स नॉट लाइक कि एक क्वेरी के चक्कर में ही पूरा प्रोसेसिंग टाइम इंक्रीज हो गया। ऐसा नहीं होगा कि 5-10 मिनट्स आपको एक ही क्वेरी को रिजॉल्व करने में लग रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर स्पार्क आरडीडीज। तो आपने देखा होगा कि हम जब स्पार्क के बारे में बात कर रहे हैं, हम बहुत हद तक मेमोरी के रिस्पेक्ट में हम चीजों को डील कर रहे हैं, और या ये कह लो कि जो प्रॉब्लम हमारी जो सॉल्व कर रहा है आरडीडीज इज बिकॉज ऑफ कि वो रैम में डेटा को प्रोसेस करता है, ठीक है। हम स्टेबल स्टोरेज या हमारा जो फिजिकल स्टोरेज है उससे हमारा इंटरेक्शन बहुत कम है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई स्पार्क इज said to have 10 times faster processing speed, okay। So this is how your spark is basically solving these problems, okay। then spark RDDs के रेस्पेक्ट में हम फीचर्स की बात कर लेते हैं। lazy evaluation, so I told you because of the two operations, the transformation and action, we are having lazy evaluation। so lazy evaluation इन दोनों के रेस्पेक्ट में कैसे होता है? बेसिकली होता क्या है, जब भी हम एक आरडीडी क्रिएट करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने कोई एक आरडीडी क्रिएट किया, तो इट इज नॉट लाइक कि जैसे ही हमने एक आरडीडी क्रिएट किया वो प्रोसेस होने चालू हो जाती है, इट्स नॉट लाइक दैट। इट बेसिकली होता क्या है कि हमने एक आरडीडी क्रिएट किया, तो जो क्रिएशन का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यानी कि हमने जो आरडीडी क्रिएट किया दैट प्रोसेस इज ट्रांसफॉर्मेशन। एंड जब हमें कोई भी आरडीडी प्रोसेस करनी है, यानी कि उस आरडीडी को इवेल्युएट करना है, देन द सेकेंड स्टेप ऑपरेशन वी डू इज एक्शन, यानी कि हम एक्शन परफॉर्म करते हैं हमारी आरडीडी के ऊपर, तभी वो इवेल्युएट होती है। दैट इज वाई वी आर सेइंग दैट इट इज लेजी इवेल्युएशन, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपने आरडीडी क्रिएट करी और वो इवेल्युएट हो गई, नो, you have to do apply an action over your RDD, only then it will be evaluated। देखो इसके फायदे हैं, ठीक है। it's not like it's a drawback, but it's an asset, or you can say it has its benefits कि why हमें ट्रांसफॉर्मेशन और एक्शन अलग अलग तरीके से परफॉर्म करने हैं, ठीक है। so we'll discuss that, okay। then in memory computation, क्योंकि हम सारा प्रोसेसिंग इन मेमोरी रैम में कर रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर विद रेस्पेक्ट टू आरडीडीज, क्योंकि आरडीडीज बेसिक ऑब्जेक्ट्स हैं स्पार्क का। सो दिस फीचर हमने स्पार्क के रेस्पेक्ट में जब स्पार्क के फीचर्स देखे थे तब भी हमने ये इन मेमोरी कंप्यूटेशन देखा था। देन कम्स योर फॉल्ट टॉलरेंस, ओके। फॉल्ट टॉलरेंस कैसे? मैंने आपको बताया था कि आरडीडीज, लेट्स से आप मल्टीपल आरडीडीज को, और यू कैन से नॉट आरडीडीज, लेट्स से आपका एक कंप्लीट प्रोसेस है, ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल है आपके प्रोसेस का, आप अपने डेटा को प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है। तो आरडीडीज क्या करते हैं? आरडीडीज जब भी प्रोसेस करते हैं वो एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ
बनाते हैं, DAG। ओके, यानी कि एक RDD प्रोसेस हुई, उसके रिस्पेक्ट में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या DAG क्रिएट होता है। ठीक है, बेसिकली पूरा स्टेप का एक आप ये कह लो, एक स्टेप बाय स्टेप इवैल्यूएशन का आप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कह लीजिए। ठीक है, दोज आर DAGs। ठीक है, तो इस स्टेज पे RDDs ने क्या किया, फिर नेक्स्ट स्टेज पे RDDs ने क्या किया, ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली हैपनिंग। ओके, तो DAG के थ्रू ये काम होता है। अब होता क्या है, क्योंकि DAG है, लेट्स से आपका प्रोसेस यहाँ पे फेल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास, क्योंकि हम यहाँ पे RDDs DAG बना रहे हैं, तो वी हैव दिस फैसिलिटी कि हम इस स्टेज पे जो प्रोसेस हॉल्ट हुआ, इस स्टेज पे जो रिजल्ट मिला था, हम इस रिजल्ट से दोबारा प्रोसेसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हमें वापस से है ना ए से स्टार्ट करना पड़ेगा। नो, इफ समवेयर वी फेस के फॉल्ट आ रहा है, then we can use these DAGs and we can again restart our processing from the last stage or the stage before the fault occur। ठीक है, सो इसलिए हमें वापस से सारी प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं है। देखो मैप रिड्यूस में क्या होता था, लेट्स से मैप रिड्यूस में आपने मैप का जो लॉजिक था वो बिल्कुल परफेक्टली लिखा था, बट रिड्यूस में देयर वाज सम मिस्टेक। ओके, तो होता क्या था कि मैप तो आपका कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा, पर रिड्यूस में यू विल फेस अ प्रॉब्लम, और आप फेस भी नहीं कर रहे हो, आप आपने कोई गलत लॉजिक लिखा तो उसकी वजह से आप आपका जो आउटपुट है वो डिजायर्ड आउटपुट नहीं है। ठीक है, तो होगा क्या, आपको दोबारा से जार फाइल बनानी पड़ेगी मॉडिफिकेशन के साथ, दोबारा से उसे फ्रेश एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। देयर इज नो मैकेनिज्म कि आपने मैप टास्क कंप्लीट कर लिया, अब आप आगे से रिड्यूस कर लो दोबारा से उसको मॉडिफाई करके। होता था ना ये सिचुएशन। सो दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम हमारा मैप रिड्यूस के केस में था, जो कि हम स्पार्क के रिस्पेक्ट में ये चीज नहीं है। ठीक है, तो आपका फॉल्ट टॉलरेंस इम्यूटेबल, नो चेंजेस कैन बी डन। पार्टीशनिंग, आप पार्टीशन कर सकते हैं अपने RDDs की, बेसिकली आप एक RDD से मल्टीपल RDDs क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, location setup capabilities. Location setup capabilities basically means that RDDs are sent to your data। Okay, वो डेटा के, आपका जो डेटा है वो RDDs के पास होता है, सो दैट कि आप इजीली अपने डेटा को कैप्चर कर सकते हैं प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक कि डेटा लोकेलिटी प्रिंसिपल, इफ यू आर अवेयर, वो उस पे काम होता है RDDs में। ठीक है, so these are the features with respect to Spark. Okay, then comes your Spark RDDs and operations. So what we'll do is we'll discuss these transformations tomorrow, and then we'll head towards the practical part with respect to Spark. Okay, so everyone clear जो कि हमने आज हमने डिस्कस किया। Yes, ma'am. Okay. Please explain location setup capabilities once again. सी लोकेशन सेटअप कैपेबिलिटीज का मतलब है कि योर डेटा, क्योंकि आपका जो भी डेटा है वो वर्कर नोड्स पे स्टोर्ड है। ठीक है, एंड व्हाट वी द स्पार्क कॉन्टेक्स्ट इज बेसिकली सेंडिंग योर RDDs टू योर data location where your data is being stored. So since RDDs and data are residing at the same place, they'll be easily having access to the data. And because of the access, the quick access we are getting, you are easily able to process and quickly process your data. Got the point? So that is what your location setup capabilities are. Okay, you can also call it as data locality. Okay. Okay, data locality. So RDDs follow this data locality principle, that they they basically have data, or you can say this basically places the RDDs closer to your data for the ready availability. Okay, so okay,
So what I'll do is I'll share this PPT with you guys. Okay, since only one thing is left with this PPT. Okay, and tomorrow we'll be moving towards the practical sessions. Okay, how we are basically dealing or how we are processing the data, right? So you can go through these slides, and if you feel any query you have, we can discuss it. Okay. Okay, guys. Yes, ma'am. Okay, okay. So yeah, you can send your attendance in the chat box. Okay. Uh and we'll uh, we'll conclude the session for today, right? So good evening everyone, and bye. Place your attendance here and you can leave. Those who have done it, you can leave, right?